हेलो। हाँ हो। Good afternoon, everyone. So, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ୱିକରେ ଯାହା ଗୁରୁକୁଲ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ମେନ୍ସ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ତାକୁ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଚାରିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ରହିବ 15 ମାର୍କ୍ସର ଆଣ୍ଡ ଦିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲାଷ୍ଟକୁ 5 ନମ୍ବର ଆଣ୍ଡ 6 ନମ୍ବର ଟୋଟାଲ 6ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ। 5 ନମ୍ବର ଆଣ୍ଡ 6 ନମ୍ବର 20 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଟୋଟାଲ 100 ମାର୍କ୍ସ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ସୋ ବିଫୋର starting the discussion class, please let me know कि मु जो एठी जो पीडीएफ ओपन करिची ऑडियो मोर क्लियर आसुची कि नाही एंड वीडियो आपण मानको क्लियर अछि कि नाही, स्पेशली ऑडियोटा कहिबे समस्त क्लियर अछि कि नाही, बफरिंग होउची कि आई एम गिविंग यू 30 seconds for that, then I will start the class by simply assuming that audio and video both are clear. Okay. I hope समस्ते टेस्ट रेगुलरली दौथिबे, जो माने दौ नाहंती एडवाइस करिबी समस्ते टेस्ट रेगुलरली दियंतु. It will be very beneficial for your preparation. Okay, I think audio and video dita ago clear अछि. एबे हमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिबा. क्वेश्चन कोन कहिला? इकोनॉमिक्स रो क्वेश्चन अछि. क्वेश्चन पचारछि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एनपीएस बा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एंड कार कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हमें जाको कहिताउ. हाउ डू दे अफेक्ट फर्स्ट ए दीटा जिंस को फर्स्ट एनपीए आपण कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करियार अछि, देन कार कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करिवार अछि. ठीक अछि. क्वेश्चन ର डिमांड को सब बेले बुझी की चलुथिबे कि क्वेश्चन कोन कोन पचारि छि. हाउ डू दे अफेक्ट द स्टेबिलिटी एंड लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ द बैंक्स. नंबर 3 डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. ठीक अछि. प्रॉपर आमे इंट्रोडक्शन गोटे ब्रीफ इंट्रोडक्शन रो स्टार्ट करिबा, देन मु कहबी कि बॉडी को आपण कोन कोन सब पॉइंट्स लिखा हबो, सब हेडिंग्स, देन बुलेट पॉइंट्स हिसाब रे कोन कोन सब लिखा हबो, देन गोटे ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन हिसाब रे ताको एंड करिबा. ठीक अछि. ओके. बट स्टार्ट करबा आगु मु एठी किछटा देई दोछि आपन को इन्फॉर्मेशन टिके बेसिक 2026 2027 ओएस बा आईएएस पई जो माने एठी प्रिपेयर होतिबे तांको पई प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू फाउंडेशन बैच एठी लॉन्च हेछि. बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड रे आपण चाहिले आकु नै परिबे. ओडिया एंड इंग्लिश मीडियम रे आपण जोथरे कंफर्टेबल जोथरे आपण फॉर्म फिल अप करछन, जोथरे आपण एग्जाम अपीयर करि परिबे सेथरे आपण नेबे. देन आपणकर एथिरे वन ऑन वन मेंटरशिप रो भी प्रोविजन अछि. एंड फॉर मोर डिटेल्स कांटेक्ट दिस नंबर.
ओके तो मुझे आउ थे कही दूसरी ओएस एंड आईएएस जो मैंने 26 27 प्रिपेयर होते से प्रिलिम्स मेन्स एंड इंटरव्यू फाउंडेशन बैच ये लॉन्च होती ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड रे एटा से माने अवेल करि परिबे ओडिया एंड इंग्लिश मीडियम रे देन वन ऑन वन मेंटरशिप रो भी एटी फैसिलिटीज अवेलेबल अछि ठीक अछि फॉर मोर डिटेल्स कांटेक्ट दिस नंबर जोड़ा स्क्रीन रे दिया जाय से नंबर को जाई कि कांटेक्ट करिवे ओके एबे हमें जीवा आंसर डिस्कशन करबा को फर्स्ट मु तो कहितली क्वेश्चन कोन थिला एनपी एंड कार ऊपर क्वेश्चन थिला फर्स्ट हमें एटी इंट्रोडक्शन दबा कि बैंकिंग सिस्टम रो प्रॉपर फंक्शनिंग बा साउंडनेस एटा डिपेंड करे कहा ऊपर डिपेंड करे कि बैंक रो एसेट क्वालिटी केमिति अछि और तार कैपिटल स्ट्रेंथ केमिति अछि एसेट कहिले कोन बैंक जो लोन डिसबर्स करि थाए लोक मानको ठीक अछि काना लोन जते बेले से माने फेरेबे से माने प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रो सहित फेरेबे तो सेटा कोन बैंक रो इनकम एंड तार पाखरे कैपिटल केते अछि सो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो रहिला से बोथ हेल्थ ऑफ द बैंक लोन्स को रिफ्लेक्ट करे जते बेले कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो रहिला से एंश्योर करे कि बैंक्स मानको पाखरे सफिशिएंट कैपिटल अछि जदि इन केस तांकर जो एसेट बा लोन सेटा डिफॉल्ट हे जाउची कि से रिस्क टाको अब्सॉर्ब करि परिबे तो एई हिसाब रे आपण गोटे होलिस्टिक गोटे इंट्रोडक्शन आपण देबे टुगेदर दे आर क्रुशियल फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड क्रेडिट फ्लो इन द इकोनॉमी सरला इंट्रोडक्शन देन आमे स्टार्ट करबा एमती जेतोले बॉडी स्टार्ट हबो सेतोले एमती लेखिबेनी बॉडी करी के एमती हेडिंग केबे भी देबेनी हैला डायरेक्ट स्टार्ट करबे आपण हेडिंग रु एनपीए फर्स्ट कहितला कि कांसेप्ट आ तार इंपैक्ट कोन फर्स्ट डिस्कस करबा को तो कांसेप्ट हमें फर्स्ट देखिबा कि गोटे लोन जेतेबेले बैंक लोन दिए से सेतेबेले एनपीए हबो जेतेबेले कि लोन जेतेबेले देइतिबो तो जेतेबेले लोकटी रिटर्न करिवो बा बोरोवर रिटर्न करिवो से प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रिटर्न करिवो जदि कोनसी इंटरेस्ट की प्रिंसिपल ओवरड्यू रही गला 90 दिन रु ऊर्ध्व हे गला माने 90 डेज रु मोर हे गला प्रिंसिपल की इंटरेस्ट से रिटर्न करी नाही ताले से लोन टा को क्लासिफाई करी दिया जिवो एनपीए हिसाब रे ओके इट indicates default or stress in the repayment and तर impact कोन रहउची stability ऊपर कि high NPS reduce the bank profitability obviously जत्ते बळे तांकुर प्रिंसिपल बा इंटरेस्ट किछि भी आसिलानी तांका पाखकु बट से माने पैसा देई देले लेंड कर देले लोन हिसाब रे तो तांकर प्रॉफिटेबिलिटी obviously डिक्रीज हला ड्यू टू प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट काइना कैपिटल भी एबे तांको अधिका असाइड करी कि रखिया को पड़िबो ए जो लोन रो लॉस को अब्सॉर्ब करबा पई erode the capital base एबे जस्ट मु कहिली फाइनेंशियल हेल्थ तांकर वीक हबो इंक्रीज रिस्क ऑफ बैंक फेलियर्स एंड लॉस ऑफ डिपॉजिटर कॉन्फिडेंस ठीक अछि एबे तार इंपैक्ट कोन हबो लेंडिंग कैपेसिटी ऊपर बैंक कोन हबे रिस्क अवर्स हे जिवे तांकर जो लेंडिंग दबार जो कैपेसिटी थिला सेडा रिड्यूस हे जिवो रिड्यूसिंग द फ्रेश लेंडिंग फंड कोन करिवे से माने लॉक हे गला तांकर बैड लोन रे तो कोन हबो इकोनॉमी रे क्रेडिट क्रंच आसीबो फॉर एग्जांपल राइजिंग एनपीएस इन इंडियन बैंक्स पोस्ट 2010 अफेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग ए एग्जांपल ता आपण एग्जाम रे देई परिबे तापरे एबे हमें बुझवा कार कहिले कोन कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जहार फुल फॉर्म कांसेप्ट होची कि कार होची गोटे रेशियो जेमति कि एठी देखा जाउची कि ना रे ही तार रेशियो अछि ऑफ अ बैंक्स कैपिटल बैंक रो कैपिटल बाय टू इट्स रिस्क वेट एसेट्स ठीक अछि एंड कार कोन एंश्योर कराय कि बैंक केते भलो से जो लॉस हेची पोटेंशियल लॉस हेची ताको अब्सॉर्ब करि परिबो एंड डिपॉजिटर्स मानको से प्रोटेक्ट करि परिबो ओके गाइडेड बाय इंटरनेशनल नॉर्म्स ऑफ बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन बेसल 3 नॉर्म्स द्वारा एटा गाइड करा जाय इंपैक्ट आरो होची कि जदी कार हाई हैला इट मींस ग्रेटर रेजिलियंस अगेंस्ट द फाइनेंशियल शॉक्स कार केते बळे हाई हबो जेते बळे न्यूमरेटर हाई जिवो न्यूमरेटर हाई जदी गला त माने कोन एठी हमें बुझु जे कि कैपिटल बैंक पाखरे एडिक्वेट अमाउंट रे अछि तो जदी कैपिटल एडिक्वेट अमाउंट रे अछि ताले रेजिलियंस पावर बढ़िबो बैंक रो एंड से फाइनेंशियल शॉक्स को बेटर अब्सॉर्ब करि परिबो एंड इट विल एक्ट एज अ बफर ड्यूरिंग क्राइसिस प्रिवेंटिंग द इंसॉल्वेंसी इंपैक्ट हबो कि जदी एडिक्वेट कैपिटल अछि से बैंक मानन को अलाउ करिवो कि तांकर जो लेंडिंग से माने फंक्शन जो कैरी आउट करूचंदी से ताको एक्सपैंड करि परिबे सेफली हाउएवर जदी बहुत अधिका कार रिक्वायरमेंट थाए ताहाले से कोन करिवो रेस्ट्रिक्ट करिवो लेंडिंग को काना जदी रिक्वायरमेंट ही बढ़ी गला कि एतिकी कैपिटल रखिबार ही अछि असाइड करिकरी लोन रो असाइड करिकरी ताहाले कोन हबो कम पैसा बंचिबो लोन आई मीन लेंड करिवो पई कि इट विल रेस्ट्रिक्ट द लेंडिंग इफ कैपिटल इज लिमिटेड
इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एनपीएस एंड कार जेमती कि हाई एनपीए आमे देखिले कि बहुत प्रोविजनिंग दरकार ताको अब्जॉर्ब करिया पई तो असाइड करी रखा जाए हायर प्रोविजनिंग डिक्लाइन इन द कार ठीक अछि काइना कैपिटल कमिवो lower car forces banks to either raise capital or reduce the lending thus both jointly determine the risk taking ability of the banks conclude एमती करिबा कि एनपीए और कार आमे देखिले कि से माने इंटरलिंक्ड हे कि अछंदी आर इंटरलिंक्ड इंडिकेटर्स ऑफ द बैंकिंग हेल्थ जेतेबेले कि एनपीए होउची एसेट क्वालिटी केमिति अछि कोन इशू चली छि एसेट क्वालिटी रे भलो अछि कि खराब अछि सेटा को सिग्नल दिए एंड कार इंश्योर करे कि फाइनेंशियल रेजिलियंस केते स्ट्रांग अछि effective management of both is essential for maintaining stability and sustaining credit growth in the economy understood question number 2 discuss the role of small finance banks and regional rural banks rrbs in promoting financial inclusion and rural development in india okay तो क्वेश्चन पचारला कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और रूरल रीजनल रूरल बैंक्स कर जो रोल रही फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करिबारे एंड रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करिबारे ताको डिस्कस करा जाऊ बिफोर दैट मु कहूची कि ओपीएससी एंड यूपीएससी ऑप्शनल पई कि एटी तीनटी ऑप्शनल सब्जेक्ट पई कोर्स लॉन्च हेची होम साइंस ओडिया एंड पीएसआईआर जो थरे कि आपन को 100% सिलेबस रो कवरेज मिलिबो वन ऑन वन मेंटरशिप प्रोविजन भी अवेलेबल अछि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करिवे रेलेवेंट नोट्स एंड मटेरियल्स भी आपन को रिवीजन पई प्रोवाइड हेजिवो एडमिशन इज करंटली ओपन फॉर मोर इंफॉर्मेशन कांटेक्ट दिस नंबर कहला रोल ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड आरआरबीज इन फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड रूरल डेवलपमेंट इंट्रोडक्शन हैला कि फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत ही एसेंशियल फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडिया and institutions like small finance banks and RRBs they play a pivotal role in extending the banking services to on underserved sections especially जो rural और semi urban areas रे अछंती ठीक अछि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स कहले हमें कोन बुझु एक्सपैंडिंग क्रेडिट एक्सेस टू क्रेडिट कांसेप्ट होची कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स मन को लाइसेंस के दिए आरबीआई दिए टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन so
तांकर फोकस थाए कि जो छोट मोट बोरोवर्स माने अछंती जेमति कि फार्मर्स माने हे गले एमएसएमई इनफॉर्मल सेक्टर आंको ऊपर तांकर फोकस थाए सो फाइनेंशियल इंक्लूजन रे तांकर रोल कोन कि जो बेसिक बैंकिंग सर्विस अछि से ताको प्रोवाइड करंती जेमति एथिरे आपण गोटे सेविंग्स अकाउंट खाता खोली परिबे डिपॉजिट करि परिबे रेमिटेंसेस आपण को मिली परिबो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग भी माने एंश्योर करंती जेमति तांकर 75% एटलीस्ट 75% ऑफ देयर लोन्स धर से माने 100 रुपीस लोन रे डिस्बर्स करछंती ठीक अछि तो सेथिरु 75 रुपीस सेमानंकु प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग रे दबाकू पड़िबो यूज टेक्नोलॉजी ड्रिवन मॉडल्स फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी रोल तांकर रूरल डेवलपमेंट रे कोन रहउची कि से माने माइक्रो क्रेडिट प्रोवाइड करूचंती एंड स्मॉल बिजनेस लोन प्रोवाइड करूचंती जोटा कि कोन करूची एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट करूची बा प्रमोट करूची लाइवलीहुड जनरेशन रे सपोर्ट करूची इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स फॉर एग्जांपल एसएफबीज लाइक उज्जीवन एंड इक्विटास दे कैटर टू लो इनकम हाउसहोल्ड्स ओके आरआरबी आमे देखिले कि ग्रास रूट बैंकिंग इंस्टीट्यूशन आंकु कुहा जाय ए माने आरआरबी एक्ट 1976 अंडर एस्टैब्लिश हेचंती एंड आंकु जॉइंटली ओन करंती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एंड जो स्पॉन्सर बैंक्स रहिले रोल तांकर कोन फाइनेंशियल इंक्लूजन रे कि दे एंश्योर द डीप पेनिट्रेशन इन रूरल एरियाज विथ एक्सटेंसिव ब्रांच नेटवर्क जनधन योजना को प्रमोट करती डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जहाँ कुआ जाए फाइनेंशियल लिटरेसी अफोर्डेबल बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करती वीकर सेक्शंस मानकू रूरल डेवलपमेंट रोल या कि एग्रीकल्चर एसएचजी रूरल एंटरप्राइजेस मानकू फाइनेंस करूछंती रूरल क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम को आहुरी स्ट्रेंथन करूछंती जो गवर्नमेंट स्कीम्स चली जेमती कि मनरेगा वेज पेमेंट्स ताकू भी सपोर्ट करूछंती ओके कॉम्प्लीमेंटरी रोल एंड चैलेंजेस कोन कॉम्प्लीमेंटरीटी रहिला कि एसएफबी से माने कोन आनंदी एफिशिएंसी एंड इनोवेशन जेतबे कि आरआरबी रीच आउट ट्रस्ट टुगेदर दे एनहांस द क्रेडिट एक्सेस एंड फाइनेंशियल डीपनिंग चैलेंजेस रही कि जेतबे एनपीएस हाई हे जाए इन रूरल लेंडिंग दिस इज अ चैलेंज तो सेटा सेतरे कोन एंड आउ कोन चैलेंज अछि रूरल एरियाज रे कि फाइनेंशियल लिटरेसी ताको पाकरे नाही कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इनफ नाही ऑपरेशनल कांस्टेंट भी रही आरआरबीज मानक पाखरे कंक्लूजन ये कि एसएबी एंड आरआरबीज दे आर वेरी क्रूशियल पिलर्स ऑफ इंडियाज फाइनेंशियल inclusion architecture by improving access to credit and banking rural areas they contribute significantly to poverty reduction employment generation balanced regional development so आंकर capacity को strengthen करबा बहुत ही important जोटा कि further inclusive growth को accelerate करबो okay Question number 3 कौन कहला examine the constitutional position of president vice president prime minister and council of ministers in India's parliamentary system read the question जो माने ओपीएससी ओएस प्रिलिम्स 2026 देबे सेमाना पे जनरल स्टडीज एंड सीसैट कोर्स लॉन्च हेची एंड सिलेबस कवरेज आपनकर जीएस1 एंड जीएस2 बोथ एकदम 100% रहइबो वन ऑन वन मेंटरशिप भी दिया जिवो 36 टा टेस्ट टोटल रहइबो नोट्स एंड मटेरियल्स भी दिया जिवो 19 इयर्स रो चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सॉल्व पीवाईक्यूज बुकलेट भी लॉन्च हेई सारची एंड सेटा भी आपन प्रोवाइड कर दिया जिवो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कांटेक्ट दिस नंबर सो आमे जो क्वेश्चन टा पढ़िले तार आंसर आमे फर्स्ट इंट्रोडक्शन रे एमिति दबा कि इंडिया रे कोन पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चले जो थरे कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होचंदी प्रेसिडेंट से रियल एग्जीक्यूटिव संगे को एग्जिस्ट करंती नॉमिनल एग्जीक्यूटिव के प्रेसिडेंट रियल एग्जीक्यूटिव होचंदी प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओके एंड वाइस प्रेसिडेंट से गोटे डुअल कॉन्स्टिट्यूशनल रोल प्ले करंती एंड टुगेदर दे एंश्योर अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी
प्रेसिडेंट फर्स्ट देखिबा नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड तक कुआ जाए एंड को आर्टिकल जाए से अछंदी 52 रु 62 ठीक अछि एक्ट एज द हेड ऑफ द स्टेट एंड सिंबल ऑफ यूनिटी एंड तांकर से जहां भी पावर एक्सरसाइज करंती काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कर एड एंड एडवाइस रे से एक्सरसाइज करंती जोटा कि आर्टिकल 74 रे अछि की फंक्शंस जेंति एग्जीक्यूटिव जेंति देखिया गले तांकर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव और इमरजेंसी पावर्स रे हमें जे तांकर फंक्शन देखिबा एग्जीक्यूटिव रे से प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर गवर्नर्स एमान को अपॉइंट करंती लेजिस्लेटिव रे जेमति की पार्लियामेंट को समन करिबा बिल्स को असेंट दबा एंड बिल्स को असेंट मिलिला परे ही से गोटे एक्ट हुए ओके इमरजेंसी पावर रे हमें देखिबा नेशनल स्टेट एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी पावर्स भी तांका पाखरे रहिछि सो पोजीशन क्लैरिफाइड इन शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एटा देखि परिबे प्रेसिडेंट एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस ओके दिस इज वेरी इंपोर्टेंट एटा जहा हेले भी एक केस टा को आपण मेंस आंसर राइटिंग रे इंक्लूड करिवे ठीक अछि and a president act as on the aid and advice of the whom council of ministers वाइस प्रेसिडेंट से कोथरे अछंदी आर 63 रु 71 जाय एक्स ऑफिशियल चेयरमैन राज्यसभा माने जे भी वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हेबे से ऑटोमेटिकली राज्यसभा रो चेयरमैन हे जिबे परफॉर्म्स प्रेसिडेंट्स फंक्शन इन एब्सेंस और वैकेंसी प्रेसिडेंट जे एब्सेंस एंड वैकेंट थिबो तांकर पोजीशन वाइस प्रेसिडेंट ही और शी विल एक्ट एज द प्रेसिडेंट तांकर लिमिटेड एग्जीक्यूटिव पावर अछि किंतु तांकर लेजिस्लेटिव रोल बहुत क्रुशियल प्राइम मिनिस्टर हमें देखियो गले सी होचन रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एंड लीडर ऑफ द मेजॉरिटी इन लोकसभा अपॉइंट करा जानती प्रेसिडेंट को द्वारा हेड ऑफ द गवर्नमेंट तक कह जिवो सेंट्रल फिगर भी कह जिवो एडमिनिस्ट्रेशन रे पावर ताको पाखरे जेमति कि से लीड करंती काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को प्रेसिडेंट को एडवाइस करंती कि कोन जो की अपॉइंटमेंट्स रहिला की अपॉइंट हेबे को पद को सो determines the policy direction and governance priorities also and he act as link between the president and council of ministers okay काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स 74 75 रे हमें देखबे एटा गोटे कलेक्टिव एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तीनटा पार्ट रे डिवाइड रहिचंदी कैबिनेट मिनिस्टर्स मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर्स कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी माने फॉलो करंती टू लोकसभा एड एंड एडवाइसेस प्रेसिडेंट इन गवर्नेंस हमें देखले इंटर रिलेशनशिप एंड पार्लियामेंटरी बैलेंस जेमति नॉमिनल वर्सेस रियल एग्जीक्यूटिव रे देखले प्रेसिडेंट होचने कॉन्स्टिट्यूशनल हेड एंड प्राइम मिनिस्टर होचने फंक्शनल हेड कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी रे हमें देखले काउंसिल से कोन करछि एंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंश्योर करछि पार्लियामेंट को मेंटेनिंग द डेमोक्रेसी चेक्स एंड बैलेंस प्रेसिडेंट कैन एडवाइस वार्न एनकरेज एंश्योरिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटी स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी भी एंश्योर होछि वाइस प्रेसिडेंट से कोन करछि कंटिन्यूटी को एंश्योर करछि इन एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग माने प्रेसिडेंट कर जते बळे सीट वैकेंट होछि वा एब्सेंट से रहउछंदी द वाइस प्रेसिडेंट he act as the president conclusion Indian parliamentary system गोटे harmonious distribution of powers को create करे among the president vice president prime minister and council of ministers and ए जो structure ता रहिला Indian parliamentary system रा it ensures effective governance while upholding the democratic accountability and constitutional supremacy okay वैल्यू एडेड फीचर्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट आपको कोर्स थ्रू मिलिबो जेमति कि टोटल लर्निंग इकोसिस्टम रिवीजन सपोर्ट आपको मिलिबो टारगेटेड क्लासेस रहिबो बोथ जीएस1 एंड सीसैट पई कि एंड रिकॉर्डेड वीडियो क्लास आपन केतेबेले भी एक्सेस करि परिबे जदि आपन लाइव क्लास देखि नांती लाइव इंटरेक्शन आपन करि परिबे मेंटर को संगे वन ऑन वन पर्सनल मेंटरशिप रे देन एक्सक्लूसिव रिसोर्सेस आपन को प्रोवाइड हबो रिवीजन स्टडी नोट्स 19 इयर्स चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सॉल्व पीवाईक्यूज 36 टा टेस्ट रहिबो जीएस1 28 टा एंड सीसैट 8 टा टेस्ट रहिबो 22 टा सेक्शनल एंड 6 टा फुल लेंथ टेस्ट आपनकर रहउची एंड सीसैट रे 4 टा सेक्शनल एंड 4 टा फुल लेंथ टेस्ट रहउची डिटेल्ड आंसर कीज एक्सप्लेनेशन एंड पोस्ट डिस्कशन क्लासेस आपनकर सब बेले कंडक्ट हुए बाइलिंगुअल रहिबो टेस्ट गुडा जेंति कि इंग्लिश एंड ओडिया बोथ आपन देई परिबे कि जो मीडियम आपन प्रेफर करिवे से मीडियम रे आपन देई परिबे फ्लेक्सिबल मोड रहिबो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड रहिबो बेंचमार्किंग इज ऑल ओडिसा रैंकिंग आपन को प्रोवाइड हबो आपन रैंक देखि मार्क देखि जानि परिबे कि वेयर योर प्रिपरेशन स्टैंड्स एंड सेइटु आपन केमिति इंप्रूव करिवे बोनस मटेरियल इज आपन को 1 ईयर नेशनल करंट अफेयर्स मैगजीन एतरे इंक्लूड अछि सेपरेट किछि आपन को करबा पड़िबनी ओके Question number 4. Analyze the role of Mahatma Gandhi in transforming the non-cooperation movement into a mass movement.
इंट्रोडक्शन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जोटा कि 1920 रु 22 चलीथिला से गोटे डिसिसिव शिफ्ट मार्क करथिला इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम एलीट पॉलिटिक्स टू मास मोबिलाइजेशन एंड महात्मा गांधी का लीडरशिप अंडर इट बिकेम द फर्स्ट ट्रूली नेशन वाइड मूवमेंट रूटेड इन नॉन वायलेंस एंड मास पार्टिसिपेशन आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन कौन थिला सत्याग्रह थिला एंड नॉन वायलेंस थिला सत्याग्रह ए टाइम रे इंट्रोड्यूस करा जायतिला सत्याग्रह माने कोन ट्रुथ फोर्स एज अ मोरल वेपन अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल नॉन वायलेंस बा अहिंसा को एम्फसाइज अधिका दिया जायतिला मेकिंग द मूवमेंट एक्सेसिबल टू ऑल सेक्शंस एंड एटा पॉलिटिकल स्ट्रगल को ट्रांसफॉर्म कला इनटू एन एथिकल एंड पार्टिसिपेटरी मूवमेंट एथिरे कोन हला सोशल बेस ब्रॉडन हला जेमति कि पीजेंट वर्कर्स स्टूडेंट वुमेन मिडिल क्लास ए समस्त को मोबिलाइज समस्त पार्टिसिपेट कले स्कूल्स कोर्ट्स काउंसिल फॉरेन गुड्स ए सब को बॉयकॉट करा गला एंड ता जगह रे खदी एंड चरखा को प्रमोट करा गला linking nationalism with the daily life strategic use of symbolism and programs जदि हमें देखिबा खदी को एज अ सिंबल हिसाब रे यूज करा गला ऑफ सेल्फ रिलायंस और स्वदेशी renunciation of titles and honors delegitimized British authority simple and clear programs enabled mass understanding and participation हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखिया को मिलिला खिलाफत सपोर्ट लिंक द मूवमेंट विद द खिलाफत इशू टू यूनाइट द कम्युनिटीज बोथ जो रिलीजियस ग्रुप थिले हिंदू एंड मुस्लिम से माने एकाठी आसिले एंड नेशनल यूनिटी को सेई टाइम रे स्ट्रेंथन कले डिसेंट्रलाइज्ड येट डिसिप्लिन्ड मोबिलाइजेशन एथिरे कोन हैला कि लोकल पार्टिसिपेशन एनकरेज हैला व्हाइल मेंटेनिंग द सेंट्रल आइडियोलॉजिकल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क्स वो बिल्ड हैला थ्रू कांग्रेस कमिटीज लिमिटेशन एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव देखिबा कि मूवमेंट ता लार्जली नॉन वायलेंट थिला किंतु किछि स्पोरेडिक वायलेंस से नोटिस कला जेमति कि चौरी चौरा इंसिडेंट एटा केबे हितला 1922 5th ऑफ फेब ओके इंसिडेंट से कौन है मेनी लीडर्स मान को डिसअपॉइंट कला जो कौन है बहुत गुड़े अराउंड 22 पुलिसमैन मान को दे वर बर्न्ड अलाइव बाय मॉब सो क्रिटिक्स आर्ग्यू करंती कि एटा गोटे टेम्पररी सेटबैक थिला इन द मोमेंटम कंक्लूजन एया कि महात्मा गांधी से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ट्रांसफॉर्म करितले इनटू अ मास बेस्ड इंक्लूसिव एंड मोराली ड्रिवन स्ट्रगल किंतु जेतेबेले तकर एब्रप्ट एंड हैला जेतेबेले कॉल ऑफ कले ए मोशन टाको आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट इट मार्क्ड द इमर्जेंस ऑफ अ न्यू फेज इन इंडियन फ्रीडम मूवमेंट वेयर द masses became central to the fight against the colonial rule okay एंड जहाँ भी आपनकर कोर्स लॉन्च होइछि इट इज बियॉन्ड द डिवाइड एंड मूव ऑन अप्रोच जेमति कि स्टैंडर्ड मॉडल आपनकर प्रोवाइड हुए ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स रे दीटा सब्जेक्ट को अलग अलग सब्जेक्ट को एमति अलग अलग आइसोलेट करिकि पढ़ाती बट एठी गोटे इंक्रीमेंटल स्ट्रेटजी फॉलो होछि जोथरे सब्जेक्ट्स विल बी लिंक्ड टुगेदर then moving from basic understanding to complex and interdisciplinary application Question number 5. Mahatma Gandhi played a decisive role in shaping India's freedom struggle. Critically analyze his leadership in the non-cooperation movement and civil disobedience movement, highlighting achievements and limitations.
गांधीजी का लीडरशिप इन मास मूवमेंट। महात्मा गांधी से इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को ट्रांसफॉर्म करथिले इनटू मास बेस्ड नॉन वायलेंट मूवमेंट। तांकर जो लीडरशिप थिला ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से गोटे डिसिसिव शिफ्ट मार्क करथिला फ्रॉम एलिट पॉलिटिक्स टू पॉपुलर पार्टिसिपेशन। लीडरशिप इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जदि हमें देखिबा ताकर अचीवमेंट कोन थिला से मास मोबिलाइजेशन करथिले जे पीजेंट स्टूडेंट वुमेन मिडिल क्लास एमाने सब पॉलिटिक्स को आसीथिले एंड बॉयकॉट करथिले। बॉयकॉट स्ट्रेटजी रे स्कूल कोड टाइटल फॉरेन गुड्स ए सब को बॉयकॉट करा जायतला। हिंदू मुस्लिम यूनिटी हमें देखिले खिलाफत मूवमेंट रे। मोरल पॉलिटिक्स हमें देखिले जेमति कि अहिंसा सत्याग्रह को बेसी एम्फसाइज दिया जाउतला किंतु तार किछि लिमिटेशन भी थिला कायना आफ्टर चौरी चौरा इंसिडेंट एनसीएम को हठात सेटा विथड्रॉ कर निया गला। इट लेड टू डिसइल्यूजनमेंट। लिमिटेड इंपैक्ट थिला रूरल एग्रेरियन रिफॉर्म्स एंड मूवमेंट लैक्ड लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल गेन्स आल्सो। सीडीएम रे तांकर कोन अचीवमेंट थिला कि जेमति सॉल्ट सत्याग्रह जीवो दांडी मार्च सीडीएम रे सिंबॉलिक इशू मोबिलाइज्ड masses across the regions। wider participation थिला increase the involvement of women and rural population। international attention ताको मिलिला जेमति कि global sympathy से draw कले to India's cause। negotiation leverage जेमति कि led to India गांधी इरविन पैक्ट। लिमिटेशन ए थिला कि जो कंसेशन मिलिला पैक्ट रे it is limited and temporary and British सर्स माने से माने कौन कले से जो मोमेंटम चली थिला ताको रिप्रेस कर देले एंड डिड नॉट अचीव इमीडिएट पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। ओवरऑल असेसमेंट जदि हमें स्ट्रेंथ से देखिबा कि जो फ्रीडम स्ट्रगल को कन्वर्ट करा गला इनटू अ मास मूवमेंट। नॉन वायलेंस को एम्फसाइज करा गला एज अ पावरफुल पॉलिटिकल टूल। डाइवर्स सोशल ग्रुप्स यूनिफाई हेले अंडर अ कॉमन कॉज। वीकनेस थिला कि जो मूवमेंट थिला इट ऑफन सस्पेंडेड अब्रप्टली अफेक्टिंग द कंटिन्यूटी। ओवर रिलायंस ऑन मोरल persuasion over the structural change। some groups जो revolutionaries और radicals थिले से alienated feel कले। तो conclude हमें एमती करबा कि गांधीजी कर जो leadership थिला सेटा pivotal थिला in reshaping India's freedom struggle into an inclusive and ethically grounded mass movement। जेतेबेले कि तांको जो strategies थिला सेतरे किछि limitations थिला किंतु तार long term impact थिला in mobilizing the nation and delegitimizing colonial rule remains profound। okay सो कही पास 19 इयर्स 2006 रु नहीं कि 2025 जाए के सब्जेक्ट वाइज एंड चैप्टर वाइज आपनकर एटी बुक लॉन्च हे सारची। क्वेश्चन विथ आंसर आपनको एटी देखिया को मिलबो। एक्सप्लेनेशन भी आपनको देखिया को मिलबो। बुक इज ऑलरेडी लॉन्च्ड। तो आपण जहां भी स्क्रीन रे दिया जाइतबा मु जो नंबर आपनको प्रोवाइड करतली से नंबर रे कांटेक्ट करिकि आपण बुझी परिबे। A sound banking system is crucial for economic growth। Last question ajiro 20 marker ro question ta। Examine the challenges posed by NPS and discuss how CAR, small finance banks and RRBs contribute to financial stability, credit expansion and inclusive development in India। गोटे साउंड बैंकिंग सिस्टम बहुत ही एसेंशियल गोटे कंट्री रो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाई की। किंतु एनपीएस रो बढ़िबा ता गोटे सिग्निफिकेंट चैलेंज एटा थ्रो करूची। एंड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एंड इंस्टीट्यूशन सच ए स्मॉल फाइनेंस बैंक आरआरबी से माने गोटे वाइटल रोल प्ले करूचंदी इन स्ट्रेंथनिंग द सिस्टम। challenges कौन एनपीएस
से माने पोज करूछन जेमति कि कांसेप्ट एंड कॉजेस रे हमें देखिबा कि एनपीए में देखितले कि जो लोन टा मोर देन 90 डेज ओवरड्यू होई कि रहि जाय बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट बोथ नै जे कोनोसी गोटे भी ओवर 90 डेज ओवरड्यू होई कि रहि गले सेटा को एनपीए रे गणा जाय पुअर क्रेडिट अप्राइजल होची तार कॉज इकोनॉमिक स्लोडाउन एंड कॉर्पोरेट डिफॉल्ट्स इंपैक्ट कोन बैंकिंग स्टेबिलिटी ऊपर एटा आणे कि एटा प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस करछि हमें ऑलरेडी गोटे दिटा क्वेश्चन रे ऑलरेडी देखिचे केमिति प्रॉफिट एटा रिड्यूस करछि बैंक्स मानकर म ऑलरेडी कहि सारछि ओके ड्यू टू प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट erodes the capital base so financial resilience is a weak way depositor एथरे कोन हुए डिपोजिटर को लॉस हुए एंड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी लॉस हुए इंपैक्ट कोन क्रेडिट एक्सपेंशन ऊपर बैंक्स माने कोन रिस्क अवर्स हे जानती फ्रेश लेंडिंग रेस्ट्रिक्ट कर दियंती कैपिटल लॉक हे जाय इन बैड एसेट्स सो क्रेडिट स्लो डाउन हुए अफेक्ट द सेक्टर्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एमएसएमईज कार कोन रोल अछि कांसेप्ट इज कार इज द रेशियो ऑफ द बैंक कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट कहिछि एंश्योर्स बैंक कैन एब्जॉर्ब लॉसेस एंड बेजल कमिटी बेजल 3 नॉर्म्स द्वारा एटा गाइड करा जाय कंट्रीब्यूशन होछि कि गोटे शॉक अब्जॉर्बर हिसाब रे एक्ट करे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल स्ट्रेस सॉल्वेंसी एंड डिपोजिटर प्रोटेक्शन को मेंटेन करी के रखे प्रूडेंट लेंडिंग को एनकरेज करे एंड रिस्क मैनेजमेंट को एनकरेज करे रोल ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स फाइनेंशियल इंक्लूजन देखियो गले फाइनेंशियल स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को लाइसेंस किए दिए आरबीआई दिए एंड से माने कोन करंदी बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करंदी स्मॉल बोरोवर्स एमएसएमईज एंड इनफॉर्मल सेक्टर को सो क्रेडिट एक्सपेंशन तंगर देखियो गले तंगर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ऊपर अधिक फोकस थाए एंड से माने एंटरप्रेन्योरशिप एंड लोकल इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रमोट करंदी RRB Act 1976 अंडर एस्टैब्लिश हेचंदी स्ट्रांग प्रेजेंस तांकर रूरल एरियाज रे रहिछि विथ लोकल फैमिलियरिटी इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऊपर यांकर फोकस थाए जेमति कि से माने क्रेडिट प्रोवाइड करंदी फॉर एग्रीकल्चर एसएचजीज एंड रूरल एंटरप्राइजेस स्कीम्स को सपोर्ट करंदी लाइक डीबीटी एंड फाइनेंशियल लिटरेसी कंबाइंड कंट्रीब्यूशन देखियो गले कार इंश्योर्स द फाइनेंशियल रेजिलियंस एसएफपी आरआरबी से माने लास्ट माइल क्रेडिट डिलीवरी को इंश्योर करूचनी एंड एटा जे एमाने जो मिसी जानती टुगेदर दे बैलेंस द स्टेबिलिटी विथ इंक्लूजन एंड growth conclusion while npas pose serious challenges to banking stability mechanisms like car and institutions such as sfbs and rrbs जेतबेले कि nps गोटे serious challenge throw करूची एई सब institution and car as a tool से कोन करूचंदी से माने banking system को और strengthen करूचंदी by ensuring resilience credit access expanding and promoting the inclusive development and strengthening these pillars I mean car sfbs and rrbs is key to sustainable economic growth. Okay, with this आपनकर आज डिस्कशन क्लास आज कंप्लीट हेची 6टा क्वेश्चन आज हमें आज यूजुअल डिस्कस कले नेक्स्ट वीक भी हमें 6टा क्वेश्चन आज यूजुअल डिस्कस करबा आई होप समस्त ए वीक रे जहां भी एग्जाम हबो समस्त एग्जाम देबे एंड थैंक यू फॉर वाचिंग.